Graphs, we have already seen different types of graphs, like directed, undirected. We also saw the permutations and combinations. If you have n vertices and m edges, right? Then we saw connected graphs, disconnected graphs, and we also saw something called as minimum spanning tree. Right? Then we moved on to prims, we moved on to cruscals. We did see an example on it also. This is something which is very important. DSU, right? It's like once you understand it, it's very easy to implement. That's the best part of it. Code करना easy हो जाता है ग्राफ में, right? Because it's मतलब you will get to know, right? So it's called as disjoint set union. Disjoint set union, right? It's a different data structure altogether, but it's very much optimized to represent graph. Graph representations अब तक आपने क्या पढ़ा है? Adjacency matrix, right? Adjacency matrix अगर n vertices और m edges हो, right? Then adjacency matrix n by m की बनेगी. n by m की बनेगी. n into m. If you have n edges and m vertices, adjacency matrix dimensions क्या होंगे? What will be the dimensions for adjacency matrix? Adjacency matrix n by n का होता है, right? And then अगर v1 और v3 के बीच में एक edge है तो आप 1 represent करते हो. Yes or no? Yes, sir. Never ever forget the basics. Did you remember? Yes, sir. n by n का बनाओगे v4 और v7 में अगर edge है तो v4 और v7 में 1 स्टोर होगा. v1 और v7 में नहीं है तो v1 और v7 में. Got it? An adjacency list, so you know. Array and you store all the edges of the array. Right? So these are different representations. Disjoint set union you could use to represent graphs. It's very different, but once you understand it, you will like it. Okay, so let's just look at this data structure. For DSU, we also call it as union finding. All right. Many problems become way too easier after you know exactly how to implement this. Right? So union finding में there are basic 3 operations. मतलब it's a data structure, right? So just stack is a data structure. What are the basic operations? Push, pop, peek, size. हाँ? Is empty. 5. Right? So वैसे union find में you have 3 operations, right? One is called make set, then union set, and then find set. Alright. So basically नाम ही लिखा है disjoint set, right? So set पता सभी को क्या होता है? It contains only unique elements. Very clear? Super. So make set मतलब कि v vertex को leader मान के create a set. Just try to understand this, right? कि make set v, what does this function do? It creates a set wherein v is the leader of that set. Alright. Once we look at the application on graphs, it will be very clear. Right? Union sets A and B मतलब कि there were 2 disjoint sets mutually exclusive A and B. Let's say A में you have v1, v2, v3, B में you have v4, v7, v8, and now you are performing a union of both. Right? तो 2 सेट है, दोनों सेट का अपना एक लीडर होगा, right? And then you will perform union. कैसे perform करेंगे we'll see. But I hope what is make set and what is union set is clear as function. Right? Make set में you pass the parameter v, and what's the function? What does the function do? It creates a set with v as the leader. Union sets मतलब you pass 2 different sets A and B. A and B are 2 different sets. A has its own leader, B has its own leader. You just merge them. You perform a union of both of them. Understood? All right. Then you have something called as find set. So if I pass B to this function called find set, what it does is it just returns the leader of that set which consists of V. मतलब अगर मैंने find set v7 पास किया
तो V7 किसी ना किसी सेट को बिलोंग कर रहा होगा, तो इट विल फर्स्ट फाइंड द सेट कि V7 किसको बिलोंग कर रहा है, द सेट टू विच V7 बिलोंग्स, एंड इट विल रिटर्न द लीडर ऑफ दैट सेट. Let's say V7 belongs to V1, V7, V12, and V1 is the leader. So if I do find set V7, it will return V1. Very clear? Yes, sir. Any doubts? No. Now it will be very clear once. Now let's look at application. Okay. So for graph representation, what we do, we store sets in the form of trees. Right? And it's now it's very intuitive, right? The root of the tree will be exactly root of the tree will be representative, or you call it leader of the set. Very clear? Now it's becoming clearer, right? We'll also write code to it, right? So root of the tree will be the representative or leader of that particular set. And graph can consist of many trees as well, right? Because you have connected graph and you have disconnected graph as well, right? In fact, that's what we had seen. Even something of the form of this. This entire structure can be one graph, right? सिर्फ वो connected नहीं है. If you just add two more edges, either this or this, or मतलब many choices are there, but two more edges if you add, it will get connected, right? So then can you imagine now if you are representing this graph in disjoint set? So let's see. Suppose this is my final tree structure, right? How will it start? All the vertices would initially belong to so it would be 4 different sets, है ना? 1 is a different set, 2 is a different set, 3 is a different set, 4 is a different set, right? वन जिस सेट में उस सेट का लीडर भी वन ही है, सो इट्स हिज ओन एंसेस्टर, राइट? वो खुद का ही पैरेंट है, राइट? अभी उसका कोई है ही नहीं, ही इज एन ऑर्फन नाउ, राइट? सो 1 2 3 4, so this will be 4 different sets. Now let us say I know that 1 is parent of 2, so what will I do? 1 comma 2, a set will get created, right? And 1 would be the leader, right? Now let's say 3 and 4, and 3 is the parent, so 3 will get created. 3 comma 4, a set will get created. Basically, what you are doing is performing a union of the sets 3 and 4. Now are you getting it? Yes, sir. Right? So you are performing union of sets 3 and 4. And last में now you know 1 is parent of both. 2 का तो है, but also 3. So I perform a union of 1 comma 2 and 3 comma 4 with 1 as the leader, right? And it is nothing but root of the tree, right? Just think for 2 minutes and tell me how would you code this? How would you code the 3 functions? Now whatever we have seen is more mathematical, right? एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर शायद यूज करना पड़े फॉर एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन पॉइंट. कोई बता सकता है एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो? हर एक नोड का कोई ना कोई पैरेंट तो होगा ही. अगर वो अकेला है तो वो खुद का ही पैरेंट होगा, राइट? और ऐसा भी होगा कि ये नोड का पैरेंट ये है, एंड इसका पैरेंट ये है, एंड इसका पैरेंट ये है. It's possible, right? Yeah. How would you store that information? जैसे यहाँ पे if I'm trying to implement this, find set 4, तो what should it return? 1. How would you store that? Now think in terms of syntax. कि ये कोड कैसे करोगे? How would you make this data structure?
These are the three functions, right? We have just declared the function. How would you define them? Let's start with the easy one. Let's start with make set. Suppose I am passing make set. Return तो कुछ नहीं करेगा, right? Parameter क्या होगा? एक let's say integer, an element, right? But एक चीज optimize करने के लिए what you do ना? You create a new array called as parent array, जिसमें आप हर एक नोड का उस पोजीशन पे उसका parent स्टोर करके रखते हो, right? I'll tell you how to do it. सबसे पहले if I want to write let's start with make set. Make set will return void. And input parameter would be let's say an integer. I call it b, right? And what will I do now? मैंने आपको बोला ना कि एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. Anyone? हाँ, पेरेंट एरे में क्या करोगे ताकि ये पता चल जाए कि मेक सेट आपको v का एक सेट बनाना है. पेरेंट एरे तो बनाया है आपने, तो पेरेंट एरे में now you are making a set v. मतलब what is happening? Just one node हो अपना खुद का एंसेस्टर खुद ही खुद का लीडर है. मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस. सो व्हाट आई डू इज parent of v is equal to v. Perfect. Super. That's it. Are you getting it? Now just think and union set कैसे परफॉर्म करोगे a और b का. जब दो सेट आ रहे हैं, एग्जांपल भी इमेजिन करो, 1 2 एक सेट का, 3 4 एक सेट का, यूनियन करते हो क्या चेंज होगा? सोचो parent array में क्या चेंज होगा? Just try to create this parent array for the tree ना. Let's say your tree looks something like this. Let's say your tree looks something like this. 1 2 3 4. parent array होगा कितने साइज का? 5 क्यों? 0 इंडेक्स को 0 to 4. हाँ, तो जो भी है मैं 0 को 1 मान लेता हूँ. But let's say to represent it easier 5 का ले लेते हैं. It would be better, right? नहीं तो फिर मेरे को यहाँ पे parent of b minus 1 equal to b लिखना पड़ेगा. Are you getting it or no? क्योंकि 1 0 पे चले जाएगा ना? Yes or no? Very small ones, right? So let's say 0 1 2 3 4. This is 0 1 2 3 4. This is not useful for us because node 1 से start कर रहे हैं. और इसी को start node 0 से भी, मतलब there's a node 0 से represent कर रहा है. Anyway, तो अभी सबसे पहले क्या होगा? 2 का parent कौन है? 1. 1 का parent 1 The set looks like this. 1 2. तो 1 तो अभी भी 2 का लीडर है ही है. And 2 का लीडर कौन है? 1. Super. 3 4 में this is a set. 3 में क्या स्टोर होगा? 4 में 3. Super. Now try to design union set. जब आप 1 और 2 और 3 और 4 को कंबाइन कर रहे हो, मतलब आप 1 से लेकर 3 तक ये कर रहे हो, तो what is it that you are doing? पेरेंट चेंज करना पड़ेगा किसका? 3. ओके. सबसे पहले मुझको बताओ कि यूनियन सेट कुछ रिटर्न करेगा? नो, राइट? एक बार यूनियन हो गया, पेरेंट में इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, इट्स डन. सो इट विल ऑलवेज बी और इट विल ऑब्वियसली बी void. यूनियन सेट, राइट? इनपुट पैरामीटर्स क्या है? टेल मी दिस. दो सेट आएंगे. सेट्स नहीं है. दो सेट आएंगे.
हाँ वो सेट है, but how are you representing set? By the leader. So just two integers in A and B, wherein A and B are leaders of that word. Exactly. Right? So that's the beauty of this. It's so simple to represent, right? So in A, comma in B. Right? Now think for a minute and give me like the most optimized version of this. मतलब how we do like this in the most optimized way. अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मेरे से कि जब भी मैं कोई यूजर बोल रहे हो कि ए और बी को कंबाइन करना है, राइट? ये तो 1 और 3 को कंबाइन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 और 3 को कंबाइन करना है, तो यूजर क्या पास करेगा कि यूजर क्या बोलेगा कि 2 और 3 को यूनियन कर दे, राइट? बट 2 and 3 are not leaders. So what do you do first? Find set. Find leaders. Get it? Leaders कैसे find करोगे? Parent array. हाँ. Leader store parent array में, but find करने के लिए किसको कॉल करना पड़ेगा? So let's say I would write something like A is equal to find set and B is equal to is this correct? Is there something missing now? I'm done. Update the parent array for B. Exactly. Update the parent array. तो क्या अपडेट होगा? Parent of किसका parent कौन बन रहा है वो पहले सोचो. B का parent A बना. अगर सपोज दोनों का parent सेम है तो अपडेट करने की जरूरत है ही नहीं. सपोज दोनों का parent सेम निकला तो अपडेट करने की जरूरत है नहीं. So अपडेट कब करोगे? Only if A is not equal to B. And then what you would do is update the parent array if they are not equal. कैसे करोगे? Parent of B is equal to understood. Read it once more now. See, that's what I'm saying. The best thing is कि सिर्फ 4 लाइन का कोड बोलेंगे. Whenever you have to implement graph और इसके ऊपर कुछ algorithm perform करना है, तो then it depends कि find set call करना है, make set call करना है. So it's just 4 lines, but understanding this is very important. Now take a minute and tell me this. कौन सा बचा? Find set B. ध्यान से सोचना. What generally मिस्टेक पता है कहाँ हो जाती है कि जब आप सोचते हो ना तो आप किसी एक एग्जाम्पल को लेके सोचते हो. तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ अगर ये एग्जाम्पल को लेके सोचोगे ना तो शायद गलत आंसर बताओगे. टेक अ मिनट, think in a generic fashion. If I am asking you find set V, so V is a node and you have to find उसका leader. How would you do? Recursively we can find. Exactly. Recursively तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं आपको 4 का leader ढूंढने बोल रहा हूँ, right? तो 4 का parent 3 है, 3 का parent. इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ गंगोत्री के पास जाओ. Go to the root of everything. Whenever you want to learn something, go to the root of it. Learn from books, right? If you are learning an algorithm, learn the algorithm first. Learn the mathematical proof behind it. And believe me, even that's not enough. Just learning the mathematical proof will make you feel कि हाँ चलो I know this thing, now I know this algorithm. But you yourself have to redo the proof without taking help. मतलब एक बार पढ़ लिया जैसे फिबोनाची का आई हैड टॉट यू, राइट? a 1 + √5/2 गोल्डन नंबर से. तो एक बार आपने पढ़ लिया बट घर पे जाके बिना देखे स्टार्टिंग से उसको डिराइव करने का जब ट्राई करोगे ना, दैट इज व्हेन यू कुड से कि नाउ आई नो दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट विल डेवलप योर ब्रेन, राइट? सो नाउ टेल मी, हाउ वुड यू राइट find set?
फाइंड सेट रिटर्न क्या करेगा? हाँ, तो डेटा टाइप क्या होगा? int find set and input क्या होगा? एक नोड, yes or no? Yes. So again int a, let's say. You have to do it recursively, but how will you do? For loop, while loop, क्या use करोगे? If base अच्छा, condition. tell me something. हाँ बस ठीक है ना parent of. Do you think recursively जाने की जरूरत है? Obviously recursive सोचने की जरूरत है, but the best part is to make the data structure more efficient. While performing union of A and B, तभी ही हमने उनके पैरेंट्स मर्ज कर दिए थे. Are you getting my point? Let's say I have something which looks like this. Right? Two different sets. I am trying to perform union of, let's say, 2 and 6. Is this visible? Right? Let's say I am trying to perform union of 2 and 6. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 2 का पैरेंट फाइंड करूँगा. तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर? 1. 6 का पैरेंट फाइंड करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा? 3. क्योंकि पहले से जब 6 का मैंने मेक सेट किया होगा, तो मैंने 6 का पैरेंट वैसे ही स्टोर करके, मतलब जब भी उसका यूनियन हुआ होगा, तो 6 में उसका ओरिजिनल पैरेंट ही स्टोर होगा. Are you getting my point? Yes or no? Yes sir. So 3, right? And then what do we do? Parent of 3 is equal to 1. Something of this sort, right? So that's the reason recursively जाने की जरूरत है ही नहीं. Just 2 statements. क्या लिखोगे? तो एक को पैरेंट ऑफ ए से चेक कर लेंगे, अगर इक्वल है तो ए को रिटर्न कर देंगे. Okay. Anyone else? Anyone else? जो आपने बोला वो तो एक कंडीशन हो गई. अगर इक्वल है तो आई कैन राइट इफ क्या है ये ए, राइट? तो इफ parent of A is equal to A, what I do? Return A. What's the other condition? Think someone different. Call find set on parent of A. Exactly. So basically अगर मैं सीधा लिखूंगा रिटर्न फाइंड सेट ऑफ व्हाट? A या पैरेंट ऑफ A? Parent of A. पक्का? Yes. पक्का? Yes, that's correct, right? So return क्या नाम है? फाइंड सेट पैरामीटर व्हाट विल पास हियर फाइंड सेट में पैरेंट ऑफ ए. parent of A. So this is a recursive function. Okay. So find set parent of A. Yes. This is what union find is, right? Once you understand it, now graph will become way more easier for you. मतलब you will realize कि let's say दो strongly connected components को join करना है, क्या करोगे आप? Union करोगे, right? अगर graph के applications है कि this graph represents village A, this graph represents the road network of village A, road network of village B, right? And there are many such villages. And तुम्हें बोला गया है कि new roads have been constructed
now find out the number of islands, मतलब number of villages which are not connected to each other, right? तो let's say A था, B, C, D, E, F, G, H ऐसे अलग अलग villages थे. A to B, B to C, C to D रोड बन गया. तो A, B, C, D एक यूनिट हो गया, right? Are you getting? So in that case, don't you think this would be really beautiful data structure to use? क्योंकि जब भी पहले तो स्टोर कर लो अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, राइट? सेट्स बना लो, पैरेंट का एरे बना लो, एंड व्हेनेवर दे से कि ए और बी में ए विलेज इज अ ग्राफ, बी विलेज इज अ ग्राफ, एंड देयर इज अ न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड बिटवीन ए एंड बी, यू विल जस्ट परफॉर्म यूनियन, राइट? और ऐसे सारे रोड्स कनेक्ट होने के बाद लास्ट में सिर्फ पैरेंट एरे स्कैन करोगे और जितने यूनिक होंगे, राइट? क्योंकि जो कनेक्टेड है उनका पैरेंट एक ही होगा ना सबका. आर यू गेटिंग इट और नॉट? पक्का? जैसे विलेजेस 1 2 3 4, राइट? उनका सबका पैरेंट 1 है, तो पैरेंट एरे में 1 2 3 4 सब जगह 1 स्टोर होगा, राइट? एंड लेट्स से 5 6 7 कनेक्टेड है, तो 5 6 7 पे 5 5 5 स्टोर होगा. आर यू गेटिंग दिस? So this is all about union and find. Okay.